Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Shubham Sir Classes. So ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି କଣ କରିବା? ଆମେ ଆଜି the priceless gift ର MCQs discussion କରିବା. ଠିକ ଅଛି? କଣ କରିବା? priceless gift ର MCQs discussion କରିବା. ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ. ଠିକ ଅଛି? ପାଠ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ପାଠ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା. ଠିକ ଅଛି? ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ. ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଯାହା ଅଛି, MCQ ଯାହା ବି ହେଇ ପାରିବ, ଠିକ ଅଛି? ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବା. क्वेश्चन दिया है जी, ऑप्शन दिया है जी, हमें ठीक ऑप्शन को चूज करबा. ठीक अछि? ताल देखिबो चलो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देची व्हाट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट डिड द नरेटर विजिट इन लंडन. ताहले लंडन ने नरेटर माने एटी कोन लेखक बा ऑथर. ताले लेखक लंडन ने जो रेस्टोरेंट को जायथिले सेटा को प्रकार रेस्टोरेंट थिला? चाइनीज ना वेजिटेरियन ना इटालियन ना कॉन्टिनेंटल कौन थिला? वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. Then what activity was the narrator engaged in while waiting for lunch? ताहले narrator कौन करूथिले? लेखक कौन करथिले जेतेबेले से ताको कोन लंच को अपेक्षा करिथिले, जेतेबेले ऑर्डर देई सरला परे लंच ताकर आसीबार टाइम थिला से किपरि भाबरे निजको व्यस्त रखिथिले? By reading books, by reading a book, drinking tea or skimming a newspaper or talking to the waiter. कौन? Skimming a newspaper. ठीक अछि? Then what physical feature of the girl first caught the narrator's attention? ताले को भली भाबरे कौन कौन तार रूपरंग थिला? कहार सी झियोटीर रूपरंग थिला जोटा कि नरेटर को दृष्टि आकर्षण करथिला. Her hair, her large sad eyes, her shoes, her dress. कौन थिला? Her large sad eyes. Then what specific question did the girl ask the cashier about the narrator? ताहले झियोटी कैशियर को नरेटर को विषय रे कौन क्वेश्चन पचारिथिला? Is he rich? Is that gentleman an Indian? Does he live nearby? Is he a doctor? कौन पचारिथिला? Is that gentleman an Indian? से भद्र व्यक्ति जनक इंडियन बोली कि नाही से झियोटी कैशियर को पचारिथिला. Then what did the girl visit the restaurant specifically on Saturday? ताले कौन पाई झियोटी केवल कौन शनिवार ही रेस्टोरेंट को जाउथिला? कौन पे जाउथिला? It was a holiday. It was payday. The food was cheaper. Her brother visited there. कौन पे? It was payday. माने से जो जॉब करथिला जो कौन काम करथिला से कामर पैसा मिलिबार दिन से दिन थिला को दिन शनिवार ही थिला. सेथि पई पैसा मिलिले से कोन करथिला? रेस्टोरेंट को जाउथिला. Then what impression did the narrator form about the girl based on the waiter's information? ताहले waiter ठारू सुनिला परे झियोटीर खबर जानि सरला परे ता विषय रे जानि सरला परे नरेटर को रिएक्शन केमिति थिला? से झियोटी विषय रे नरेटर कोन भाबिथिले? She was wealthy, she was a student, she was poverty stricken or she was a tourist. कौन? She was poverty stricken. Poverty stricken माने कौन? दारिद्र्य रे ग्रस्त. ठीक अछि? दारिद्र्यता ग्रस्त थिला. Then where was Maggie's brother Frankie stationed? ताहले पचरा हे जे कौन मैगी रो भाई जो फ्रैंकी थिला से कोठी तार जॉब थिला? कोठी से जॉब पई रहुथिला? इंडिया ना इंग्लैंड ना अमेरिका ना अफ्रीका कोठी? इंडिया रे. Then what was the primary cause of Maggie's mother worry? ताहले मैगी रो मारो माने व्यस्त हबर थिला. से
से जो व्यस्त हेउथिले मैगी रो मां जो व्यस्त हेउले कोन पाए व्यस्त हेउथिले lack of money na her own illness no letter from Frankie or Maggie's job कोन पाए no letter from Frankie then who was Maggie's only guardian ताहले मैगी रो only guardian के थिले her father her aunt her brother or her grandmother के थिला her brother ता भाई ही तारो only guardian थिला then what was Mrs. Bethy doing when the narrator first visited their home ताहले ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ମ୍ୟାଗି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମିସେସ୍ ବେଥି ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ ସିୱିଂ କ୍ଲଥେସ୍ मेकिंग cakes reading a book or sleeping କଣ କରୁଥିଲେ making cakes then why did Mrs. Bethy make cakes on Saturday night ତାହେଲେ ମିସେସ୍ ବେଥି କଣ ପାଇଁ ସଟରଡେ ନାଇଟ୍ ରେ ହିଁ କେକ୍ ବନଉଥିଲେ କଣ ପାଇଁ for a party to sell them for charity or for the narrator कौन पाई to sell them then how did the narrator describe Punjab to Mrs. Bethy ताहले लेखक जनक पंजाब को केमिति describe करथले मिसेस बेथी आगरे मिसेस बेथी जेतबळे पचारिथिले पंजाब टा गोटे केमितिका राज्य पचारिथिले सेतबळे लेखक कोन कहिथिले तांको पंजाब विषय डेंजरियस full of tigers na a fine healthy place na very hot कौन कहिथिले a fine healthy place then what object did Frankie send to his family ताले फ्रैंकी तांको ता परिवार पाखको कोन को पदार्थटा पठेइथिला को भली ऑब्जेक्ट उटे पठेइथिला a necklace a crystal ring a photograph or a watch को पठेइथिला a crystal ring then what was the family's belief regarding the crystal ring ताले मैगी रो जो परिवार रो विश्वास कोन थिला से क्रिस्टल रिंग को नेकी कोन विश्वास थिला ताका मन रे it brought luck it could show the distant person it was expensive or it cured illness कोन थिला it could show the distance person ताले दूर रे थिबा लोकन को ए मुदी द्वारा देखि हबो बुली कोन तांका मन रे विश्वास थिला काहा मन रे मैगी आउ ता मांग मन रे then why did the narrator decide not to shatter the family's superstition about the ring ताहले लेखक कोन कोन पे डिसाइड करिथिले कि से परिवार रो अंधविश्वास भांगीबेनी बोली से रिंग को ने कि जो तांकर जो मन रे जो अंधविश्वास थिला सेटा को न भांगीबा को कोन पे डिसाइड करथिले he believed it too he wanted the ring it gave them hope or he was afraid कोन पे it gave them hope तांको एई मुद्दीटारो आशा मिलिबो किछिटा आशा मिलि पारिबो बोली से तांको कोन तांको आशा तांकर जो विश्वास थिला से रिंग को नै कि सेटा न भांगीबा को डिसाइड करिथिले then what happened to Mrs. Bethy several months later ताले किछि मास परे मिसेस बेथी के सहित कोन हैला she won a lottery she fell seriously ill she moved to India or she started a shop कोन she fell seriously ill she सांघातिक भाबरे कोन असुस्थ हेई जाइथिले then what request did Maggie make of the narrator when her mother was ill ताहले मैगी रो मां जेतेबेले असुस्थ थिले बहु जोरे असुस्थ होई जाइथिले सेतेबेले मैगी लेखकन को कोन अनुरोध करथिला कोन करबा को अनुरोध करथिला to give money to gaze into the crystal to call a doctor or to write a letter कोन to gaze into the crystal से जो मोतीटा थिला क्रिस्टल रो मोतीटा थिला से मोती को देखिबा पई कोन मैगी रिक्वेस्ट करथिला कैरेक्टर को then what lie did the narrator tell Mrs. Bethy ताहले लेखक मिसेस बेथी को की प्रकार मिछ कहिथिले कोन मिछ कहिथिले Frankie is coming home Frankie is alive and well Frankie sent money or Frankie is promoted कोन कहिथिले Frankie is alive and well Frankie भलो अछि बोली से मिछ कथा कहिथिले काहाको मिसेस बेथी को then
How did Mrs. Bethy react to the narrator's word about Frankie? ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ କିଏ ମିସେସ୍ ବେଥି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାରେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କି ଫ୍ରାଙ୍କି ଠିକ ଠାକ ଅଛି ବୋଲି ସେ କି ଭଳିଆ ରିଆକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ? She cried with happiness. She did not believe him. She fainted or she got angry. କଣ ହେଇଥିଲା? She cried with happiness. ସେ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ. Then when did Frankie actually die? ତାହେଲେ actually ରେ Frankie କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା? Before the narrator's lie, after the narrator left, on the day of the lie or a year later? କେବେ? Before the narrator's lie, narrator ଯେବେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ, ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହିଥିଲେ କି ଫ୍ରାଙ୍କି ଠିକ ଅଛି ବୋଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫ୍ରାଙ୍କିର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା. Then why did the narrator feel ashamed to face Mrs. Bethy before leaving? ତାହେଲେ ଲେଖକ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କଣ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ? He owned her money. He had lied to her. He broke the ring or he lost his job. कौन? He had lied to her. से तांको मिछ कहथिले सेतिपाई से लज्जित थिले. Then what was the narrator's new job posting? ताले narrator को जो नुआ job posting थिला सेटा कोथरे थिली? कौन थिला सेटा? ब्रिटिश सिविल सर्विस ना पंजाब सर्विस ना लंडन सर्विस ना टीचिंग कौन थिला? पंजाब सर्विस. Then what gift did Maggie give the narrator at the end? ताहले शेषरे लेखक मैगी ठारू की भलिया गिफ्ट पाइथिले बा मैगी नैरेटर को की गिफ्ट देथिला शेषरे? A cake, a ceiling, a photograph or a book कौन देथिला? ए ceiling देथिला. Ceiling माने जानिथिबो coin बा पैसा. Then what was the purpose of the ceiling Maggie gave? ताले मैगी जो ceiling देथिला तार ता पछरे कारण कौन थिला? उद्देश्य कौन थिला? सी जो ceiling दबा रो उद्देश्य कौन थिला? To pay for lunch, to buy flowers for Frankie's grave, to buy a ticket or as a fee for looking in the ring. कौन थिला? To buy flowers for Frankie's grave. Then why did the narrator accept the ceiling despite knowing its value to Maggie? ताहले मैगी ପାଇଁ से ceiling ର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଥିଲା? କେତେ ଅଧିକ ଥିଲା ସେଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ କଣ ପାଇଁ ସେ ceiling ଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କଣ ପାଇଁ? He needed money to preserve her joy of sacrifice. He was greedy or to buy a souvenir. कौन? To preserve her joy of sacrifice. से तार जो एई बलिदान रूपक खुशी को से कौन बंचेई रखिबाकू चाहुथिले सेथिबाई से कौन करथिले सब जानला परे मध्य से सिलिंग रो मूल्य मैगी पाई केते अधिक सेडा जानला परे मध्य ताठक से सिलिंग को ग्रहण करिथिले. Then what was the meaning of skimming in the text? गोटे क्वेश्चन थिला skimming the newspaper. एठी जो skimming अछि से skimming माने कोन? Cleaning milk, gliding over butter, reading quickly or removing a layer. कौन? Reading quickly. Then what does anxious mean in the phrase sad anxious figure? ताले जो sad anxious figure अछि एठी anxious माने कौन? Happy, worried, ना angry ना sleepy. कौन? Worried. Then identify the parts of speech of brief in brief remark. ताले brief remark रे जो brief अछि brief word use करा हैछि सेटा को टाइप रो parts of speech? को टाइप रो? Adjective. brief टा होछि adjective एठी. कारण से जो remark अछि remark एठी कोन noun को describe जेहेतु करिछि सेथि पई brief टा होछि गोटे adjective. Then my hands are covered with flour. What is the tense of this sentence? ताहले ये जो my hands are covered with the flour अछि ताहले एटा को sentence ए sentence टा को tense रे अछि सॉरी ए sentence टा को tense रे अछि
सिंपल पास्ट ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ना सिंपल प्रेजेंट पैसिव स्टेट रे अछि ना फ्यूचर रे अछि कोथरे अछि सिंपल प्रेजेंट रे अछि पैसिव स्टेट रे अछि ठीक अछि देन which word implies very rare and valuable ताले very rare and valuable रो मीन कोन आ भितरु कोटा को बुझोची कहार अर्थ बुझोची very rare and valuable expensive priceless cheap or common कोटा priceless then who is the author or narrator of this story ताहले ए जो स्टोरी रो लेखक किए ए गपटी रो लेखक किए मिस्टर स्मिथ मिस्टर गुप्ता फ्रैंकी और मैगी किए मिस्टर गुप्ता then what prevented Maggie from asking the narrator home earlier ताहले मैगी को कौन रोकुथिला लेखक को ता सहित घर को जिबाकू कहिबाकू किए रोकुथिला pride ना lack of courage ना her mother's anger ना the distance कौन पाए से कहि पारु नथिला कि ता सहित घर को जिबा पे कहा को लेखक को काहे कि कहि पारु नथिला से lack of courage ता पाखरे सेति कि साहस नथिला कहिबाकू सेति पाए से कहि पारु नथिला then how did the narrator open a conversation with Maggie ताले किभଳି भाबरे लेखक मैगी सहित वार्तालाप स्टार्ट करथिले आरंभ करथिले asking her name making brief remarks offering food or asking about the weather कोन करथिले making brief remarks then what was being repaired when the narrator walked Maggie home ताहले मैगी रो होम को मैगी रो घर को जेतेबेले नैरेटर विजिट करिथिले सेतेबेले जाइथिले सेतेबेले कोन रो रिपेयरिंग चालिथिला कोन मरामती होउथिला the road the village bridge the bus stand or the house कोन the village bridge then how did Mrs. Bethy regard the Indians relationship with truth ताहले मिसेस बेथी को अनुसारे भारतीय एवं सत्यता भितरे बा सत्य भितरे की भली रिलेशन अछि बोली से कहिथिले they are liars they love the truth they are indifferent or they are superstitious कोन they love the truth then why did the narrator describe his lie as the at least of my offense ताले कोन पाई लेखक कोन से जो मिछ को तांका जो मिछ को कोन पाई गोटे छोटी अपराध बोली वर्णना करथिले कोन पाई he lies often he was a white lie for a good cause he did not care it was a big crime कोन पाई it was a white lie for a good cause white lie माने कोन lie माने जानथो तमे मिछ white lie माने कोन white lie माने होची जो मिछ कहबा द्वारा जनकर किछि उपकार हेउछि जनकर किछि मंगल हेउछि जनकर किछि भल्ला हेउछि ताले से मिछ को कोन से मिछरे धरा जायनी कोन जायनी सेटा मिछरे कोन जायनी ताको इंग्लिश रे हमें कहू कोन white lie कोन white lie बुझि पालो जेंते सुनिथिबो कोन ब्लैक मनी और व्हाइट मनी ब्लैक मनी कोन जोटा किछि कोन भलो वे रे रोजगार करा जाय नथिबो खराब वे रे रोजगार करा जाय सेटा को ब्लैक मनी कहबा व्हाइट मनी जोटा ठीक भाबरे भलो रोजगार भलो वे रे हमें रोजगार करते ताको व्हाइट मनी कहबा सेमती व्हाइट लाई हमें कहबा जो मिछ द्वारा कोन कहार किछि अमंगल हुएनी जनकर उपकार हुए ताको हमें व्हाइट लाई बोली कहबा देन what did Maggie wear on the day of the narrator's departure ताहले narrators कर प्रस्थान दिन जो दिन जिबार थिला इंडिया जिबार थिला से दिन मैगी कोन पिंधिथिला a red dress a white saree black morning clothes or a school uniform कोन पिंधिला black morning clothes ताहले where was Frankie buried ताहले फ्रैंकी को कोडी समाधि दिया जायथिला London near the frontier in the village or at sea कोडी near the frontier then why did the narrator want to return the ceiling initially ताहले कोन पाई लेखक प्रथमे से सीलिंग को फेरे देबे को चाहुथिले कोन भाई it was too little flowers grow in profusion in India
he did not like flowers or it was old currency कौन flowers grow in profusion in India ताले इंडिया रे बहुत प्रचुर परिमाण रे फूल फुटे ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସିଲିଂ ର କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା ସେ ଫୁଲ ନେଇକି ସେମିତିରେ ବି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ମନା କରିଥିଲେ କଣ ମନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମ୍ୟାଗି ଦେନ୍ what emotion did the narrator feel when accepting the ceiling ତାହେଲେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ଭାବନା ଆସିଥିଲା କଣ ଲେଖକଙ୍କ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଲିଂ ଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ anger greed na grief and emotion na indifference କଣ grief and emotion then what does intrusive mean in the context of the story ताले ए जो context रे intrusive अछि intrusive माने कौन helpful unwelcome or disturbing friendly or shy कौन unwelcome or disturbing then choose the correct passive form I wrote a letter ताले I wrote a letter or passive form में कौन कोटा हो a letter is written by me a letter was written by me a letter had been written a letter is being written कौन हबो a letter was written by me आज आंसर जाने थाओ आमे जतबे ग्रामर स्टार्ट करबा ततबे एक्टिव पैसिव तुमको पढ़ाओ ठीक अछि then the breeze is being repaired identify the tense ताले ए जो tense को tense लिखा है छेड़ा present perfect present progressive passive na simple present na past progressive कोदरे present progressive passive माने present progressive रे अछि और passive voice रे अछि ठीक अछि then which word is a synonym of aggravated ताले aggravated रो synonyms कोन improved worsened solve or ignore कोन worsened aggravated means कोन खराब ହେଇଯିବା ठीक अछि then what does in a fixed mean माने कोन broken in a dilemma happy fixed harmony कोन in a dilemma तापरे moth eaten is an example of what ताले moth eaten जो हुआ है एटा कहार गोटे एग्जांपल noun ना compound adjective ना verb ना adverb कोन compound adjective कारण एठी moth जो अछि moth माने होछि कोन गोटे noun ठीक अछि eaten माने eaten होछि participle form रे लिखा अछि ठीक अछि eaten टा participle form रे लिखा अछि सेति पय एटा गोटे compound adjective then which prefix makes believable negative ताले believable रो negative करबा को हेले को prefix यूज करबा पड़बो on ना this ना in ना miss को prefix possible unbelievable तापरे which prefix fits fortune to mean the opposite ताहले fortune जो लिखा है fortune नो opposite करबा को prefix यूज करा हबा भितर on miss this or in कोन misfortune miss करा हबो तापरे Frankie had been killed what voice is this ताले Frankie had been killed एटा को भलिया voice active ना passive ना imperative ना interrogative कोन passive voice तापरे why is the story titled the priceless gift ताले तो story टार ना कोन पय priceless gift दिया हिच कोन पय दिया हिच the ring was expensive the ceiling was rare the sacrifice behind the gift was invaluable the narrator gave a lot of money कोन पय the sacrifice behind the gift was unvaluable ताहले जो sacrifice करा हेतला से गिफ्ट पछरे जो sacrifice करा हेतला से बहुत मूल्यवान ठीक अछि सेथि पई स्टोरी रो टाइटल दिया हला द प्राइसलेस गिफ्ट सो एथिला हमरा 50 टा क्वेश्चन ठीक अछि तमरो 50 टा एमसीक्यूज थिला जोटा की मेन इंपोर्टेंट थी ठीक अछि तो आज पई एति की
रहुची जय जगन्नाथ समस्ते क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिवो ठीक अछि समस्ते क्वेश्चन को बहुत से प्रैक्टिस करिवो एथिमे तमर एग्जाम रे थैंक यू।